Assalamu alaikum dear friends. Azuk son topic chu difference between while loop, do while loop and for loop. तो पचन वीडियो में पूछा से while loop क्या गो, do while loop क्या गो, for loop क्या गो. Hope तय समझ के फर्क क्या है एक do while loopस, एक for loopस तो एक while loopस आसान. So today our topic is difference between while loop, do while loop and a for loop. In the previous videos we have discussed everything about while loop, do while loop and a for loop. Hope you have got the differences between while loop, do while loop and a for loop. Today let us analyze, let us write the differences between for loop, while loop and do while loop. So for loop, first for loop, while loop and do while loop. We know that there are three different loops in C. C have three different loops, that is the for loop, while loop and do while loop. The पचन वीडियो में पूछा से वर्किंग ऑफ for loop, वर्किंग ऑफ do while loop and वर्किंग ऑफ for loop. तो आज जो इसके फर्क क्या है? ये मंत्रन for loopस, while loopस तो किस do loopस दरमियान. गोडनथी first of all अगर पूछो difference, first difference is main difference है. That is for loop जो. For loop is the entry control loop. While loop is also entry control loop. That means both for entry control loop, while is also entry control loop, but this do while loop is the exit control loop. Exit control loop. We know that loops are categorized into two main categories. These are the entry control and exit control loops. The for loop and the while loop belongs to entry control loops, while do while loop belongs to the exit control loops. Number two difference is that syntax. What is syntax? Syntax क्या है? Syntax of for loop chu. Syntax is I'm like so for the keyword, for the keyword for initialization, semicolon, condition, semicolon, and update. Then body. While loop syntax of while loop is while is also a keyword of initialization condition, body, general syntax, and update, which means initialization के करें exit control loops में क्या है? I'm syntax, initialization, do, body, update, and last पर गई while condition. The main difference between the for loop, while loop and do while loop is the syntax. So you syntax. Which you now for loop is entry control loop. It can be entry control loop. For the keyword initialization. First of all, initialization takes place. Initial value is given. From where we are going to store the
लूप, कहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूप को। इसके बाद कंडीशन, एम पच कंडीशन चेक, टेस्ट एक्सप्रेशन चेक, टर्मिनेशन एक्सप्रेशन चेक। इफ दिस कंडीशन एक्स इवैल्यूएट इज ट्रू, अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू करे तेली गस कंट्रोल इज तेली बॉडी, तेली गस नम स्टेटमेंट्स ऑफ बॉडी गस एग्जीक्यूट। If this condition, in case of for loop, if the test expression evaluate is true, then only the statements in the body gets executed. Telice akhmud body in statement gasan execute. Otherwise, the body gets skipped. The body gasan skip control goes after the body of the loop. Control chuatan body never. In case of for loop, go get into specifically. Gwanda gasan test condition ya so ये कंडीशन से कैसे या से इवैल्यूएट, अगर ये ट्रू गई इवैल्यूएट तेली गस कंट्रोल, अदरवाइज कैसे क्या को गन ताऊ एंट्री पैकेज से कंडीशन का सान चेक तो ताऊ जसोना एंट्री कंट्रोल लूप वो ये बॉडी गसा एग्जीक्यूट किन्ना that is going to be decided by the result of this condition. सच गसन ये कंडीशन से क्या एंड रिजल्ट क्या है, अगर ट्रू राव तेली गस या से बॉडी एग्जीक्यूट, अगर फॉल्स राव तेली गस नहीं की हो। ओके, next, in case of, and under this of that, it is called as entry control loop. That was just as well as entry control loop. So then you should while loop. It is also an entry control loop. You check entry control loop. अगर क्या करते हैं इंशाल्लाह से करेगा सन while अगर ये कंडीशन क्या गई है तेरी कैसी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट, तेरी कैसी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट, अदरवाइज कंट्रोल कैसे आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप वो सेम इन इसके लिए and yes, whole person gets out to take into while loop. But in case of do while loop, they would you here their syntax is different from while and do while. Here the condition is at the exit point. You condition yes exit point step. That means it's a last step. It's a last condition. It is entry step. It is near the visit at the end of the loop. It is loop end to get run. You can get something here. The first, the body of the loop gets executed. Gwanda se ye body gets control was it do and but body must gets execute. And but second condition job. Here, the body of the loop gets executed first, then the condition gets checked. But second condition check. And on the basis of this condition, next step is taken on. And the condition क्या गया थी वाले पांच दो step कसरत की बॉडी कैसा बे एग्जीक्यूट की ना मतलब तांच अकेलाइट आसान ये बॉडी एग्जीक्यूट गमस तो क्या सोना एग्जिट कंट्रोल लूप तो क्या ये कनाडी लूप यस एग्जीक्यूशन छे ये एक्चुअली करन ना मैं कंडीशन चेक मतलब ये तंच करानी एट लास्ट पर कंट्रोल तो वो ये लूप सोना ने डू व्हाइल लूप exit control loop because it checks the condition at the exit point. Are you getting? Okay. So this is the main difference between the for loop, while loop, and do while loop. Now question is, which अगर तुम syntax तो ये डाक एक नजर, तो वो for loop से पर इसमें body या चंग कुछ termination एक नजर, semicolon की है. While condition after चंग कुछ, तो वो yes की while condition या चुप semicolon. This is the one more difference. It's a block of difference. ठीक है आज here in case of for and while there is no condition, there is no semicolon after the condition. ये तंचले की है in case of while and do. Yeah, while is no condition, no semicolon after the condition termination है. But in case of do while loop there is semicolon. That is a rule. अगर भी यह तो semicolon it will show me error. अगर मैं यह को semicolon खाता it will show me error. So it is compulsory that we have to put the semicolon after this condition in case of a do while loop. Okay, but in case of while loop, we have not put any semicolon after the condition. Termination condition. Termination condition pachune se kuhun semicolon round. Take care of these things where you are going to use these loops in the programming. Okay, this is the second difference between the for loop, while loop, and the do while loop. And yes, third one is जो मैंने बोला है इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप, इन केस ऑफ फॉर लूप, फर्स्ट द कंडीशन चेक्स, फर्स्ट condition is going to be checked, condition is checked, yeah, termination check. If it evaluates false, if it result is
true, then only the body gets executed. Go, यह क्या गोल कैल्शियम चेक गसान अगर ये कैल्शियम ट्रू गई तेरे गस बॉडी एग्जीक्यूट एंड हियर आल्सो ये कुछ भी गसान फर्स्ट कैल्शियम चेक्स कैल्शियम is checked if result is true then body gets executed. Statements in the body gets executed. Then body is concerned. But in case of do while loop, use do while loop. First the body gets executed. You can say sir, body gets, and then the condition is checked. Put the condition gets unchecked. It's a big difference. First, body gets executed. At least once. At कम से कम. Then condition gets checked. Purchase current condition check. वो ये कुछ कैसा तो वो गोने से body कैसा update ये execute पच्चीस कैसा condition check. While in case of these two loops, first the condition is checked, and on the basis of result of that condition, it will be decided whether the body will get executed or not. If this condition evaluate is true, this condition evaluate is true, then the body gets executed only. But in case of do while loop, if this condition evaluate is false, even then the body gets executed at least once. That means the body of the do while loop gets executed at least once, even if this condition evaluate is false. अगर ये condition evaluate false तो गया तो अच्छा आसान तो ताइनस एक्लेटी body execute गमत. This is the underlying difference between the do while and the while loop. यहाँ do while and the for loop. And next difference, fourth difference is वो कटन से while loop इस्तेमाल करान, do while loop कटन से इस्तेमाल करान तो for loop कटन करान से इस्तेमाल. For loop से status करान इस्तेमाल जितना से और मतलब in advance पता चा आसान कि how many times we want to execute the loop. कि अच्छा आसान पता कि अच्छा कितने likely छ loop execute करान. And in that cases we use a for loop. Go for loop is used in those cases where we know in advance how many times, how many iterations are there in the loop, how many times the loop gets are going to be execute. कितने likely छ loop as execute करान या कितना iteration छ इस loop में. अगर इन सब से advance नहीं पता आसान छ तब सब इसका इस्तेमाल कुछ for loop. वो for loop से use करान, use it when we know in advance how many times, how many iterations are, how many iterations are in loop. At loop में कितना iteration है. अगर ऐसा पता चले आसान, for example, if we have to print a nature number is from 1 to 10, अगर एक पर 10 ता nature number कारण से print, वो अच्छा पता कि ऐसी दहलीज loop चलाऊं. अच्छा एक पर 10 ता loop चलाऊं. Go we know in advance that we have to print the nature number is from 1 to 10. But अगर अच्छा नहीं पता कि हम उस जो एक लेक्चर 10 बे लेक्चर वो जो एक पर 10 ता Bilateral aspect पर go different values are changed. At that time we use the while loop or the do while loop. तब success करा इस्तेमाल while loop या do while loop. Go this में fourth difference that in for loop we use it. For loop का कैसे use करान. In those cases, while we know in advance how many times the loop is going to be executed. Yeah, how we know in advance how many iterations are in the loop. As loop as कितना iteration है. In those cases, we use the for loop. तिमन chances करान कुछ for loop इस्तेमाल. तो you see do while loop च इसे करान while we not know the number of iterations.
यतन अस पते कसा इटरेशन तथन कर इस्तेमाल कुछ वाइल लूप या डू वाइल लूप। iterations in advance गोरे छनस पता तिमन जान कर इस्तेमाल कुछ while loop तो do while loop या वना यर्स तिमन जान एकनस पता छ आसान कि कुछ लाइक छ do while loop इस्तेमाल का कुछ इटरेशन छ आसान एक कुछ लाइक छ बॉडीज ऑफ द लूप का एग्जीक्यूट अगर अस पता छ एडवांस साथन छ कर for loop इस्तेमाल तो यतन अस पता किहिन छ आसान ताथन छ कर while loop इस्तेमाल तो यतन अस यसान छ कम से कम एक्लेट करन body of the loop gets execute. That is current do while loop, irrespective of the condition. Those cases where we want to execute the body of the loop at least once, there we use the do while loop. That is current system do while loop. The block solution you see for loop. Which is a difference. For loop is the popular loop. If you alter the program instead for loop is for working of for loop is there I have also said that for loop is the popular loop. Mostly commonly used loop is the for loop by programmers. Why? Because there is for loop is to initialization, condition and update. Three cheese here all the three parts of the loop, that is initialization, condition and update, they are in the same line. जनरली की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सपोज अपडेट भेज जाए कि नोन मैं ऑलरेडी पढ़ूंगा तो हम सब प्रश्न कंडीशन इंस्टॉलेशन एंड कंडीशन उसमें अपडेट दीज आर द ऑप्शनल बट दीज टू कॉमर्स आर कंपल्सरी सेमीकोलन्स आर कंपल्सरी दे आर कंपल्सरी तो जनरल सिंटैक्स पर चांसेस ताकि से आम तौर पर इसी लाइन में तो these characteristics makes it a popular loop. You have a popular loop बनावन या commonly used loop by the programmers. आम तौर इन प्रोग्रामर चे जिनसे यो है loop इस्तेमाल करन तो उस loop for loop क्या because of this advantage. Whereas ये चु नम से आम तौर ताकि करन इस्तेमाल तो ये शुन too popular क्या शुन too popular because of this reason. Okay. तो otherwise हकाउस yes कम for loop से हकाउ कर सको while loop से कर सको do while loop से प्रॉब्लम छ कि इसको कहाँ लूप इस्तेमाल कर ताकि काम करने खतरा कुछ कहाँ लूप इस्तेमाल करे के प्लस में लूप पछि पनि एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस दे आछन् ओके नेक्स्ट इज द फ्लो चार्ट नेक्स्ट इज द डिफरेंस दैट इज द फ्लो चार्ट का दिस फ्लो चार्ट छ एंट्री कंट्रोल लूपस सो छि सेम while अस्तं या for लूप अस्तं तो do while लूप छ डिफरेंट लेट अस डिस्कस द फ्लो चार्ट वुचु फ्लो चार्ट क्या छ आसान टेक या गने बनाओस या दसी साइड बनाओ फ्लो चार्ट ऑफ for and while या एंट्री कंट्रोल लूप जैसे बनाचे गने से कसं आफ्नो इनिशियलाइजेशन विशेष पाथवे the flow chart flow of program pattern and पछि आफ्नो कसं flow initialization कंडीशन से कसान चेक अगर एक कंडीशन गई चेक अगर एक कंडीशन ट्रू was if condition is true then check some body execute body of loop check some execute अब पछि अपडेशन का करानस प्लस प्लस अपडेट बेचक बॉडी चेक अगर ये कंडीशन फॉल्स कंट्रोल या कंट्रोल आउट बॉडी ऑफ लूप out of body yes as also loop time never can control in temper statement thing can execute whereas in case of this is the flow chart of both while and for loop that's unique whereas in case of exit control loop that can come
Goddess is like initialization. After initialization, some body execute. Body of loop. After that, some updation. Update, and after that condition check. Well, last condition check. Condition. अगर ये कंडीशन ट्रू was, तेरे बे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट. अगर ये फॉल्स was, तेरे बॉडी आउटसाइड the loop. Controls का सांतेले loop यहाँ. This is the difference between the entry control loop and the exit control loop. Flow charts. तो उसी एक ना initialization से save शी ये चेक सब condition check. Entry control forest wireless में wireless do wireless में चेक सब body execute. वो अगर की condition false तो तो activate body execute. गम ये तंचे अगर condition false गए तेरे के body execute की या पर this control साइड नहीं आवर. मगर ये तन अगर ये body body execute and purpose update last is condition check. अगर पस्सा false गए evaluate till then never मत तो condition activate some body execute. गम this power check is entry control loop yes ना exit control yes कुछ start sheet control condition के साथ check yes last के साथ condition check. लेकिन क्या से कैसा अगर condition false गए body गैस ने execute की लेकिन अगर condition false थी कैसे activate से तो एक body of the loop के साथ execute. This is the main difference between the entry control loop and the exit control loop. या मतलब for loop, while loop and do while loop. Hope कि तो ऐसा समझ कि for loop क्या गो, while loop क्या गो, तो do while loop क्या गो. Inshallah, in the next video we are going to discuss the another concept, another constraint, another keyword, that is the break keyword. Break capture karan, that will be discussed in the next video. Till next video, take care. Bye bye.